नमस्ते, स्वागत है आपके इंडिया दिस वीक के एक नए एपिसोड में और मैं हूं आपकी होस्ट आमना अंसारी। Hi, this is Khalid Beg, and welcome to yet another episode of India This Week. Gives us a great honor and pleasure to have J Sai Deepak join us today for a discussion on his bestseller, India, that is Bharat, uh, Coloniality, Civilization, and Constitution. And easily, from most of our viewers, it's been a request for months now to have him, and we feel really great to have him. Namaste, J Sai Deepak ji, and welcome. Namaste, Amna ji. Namaste, Khalid ji. Thank you for having me on your show. Most people would be surprised that I'm on your show. I don't know why. I don't think they should be surprised at all. They should have happened long ago. We are glad. Most important question, because I mean, since you're gaining such prominence now in the last few years, what does J stand in J Sai Deepak? So here's a very caste-based response. Okay, so I'm a Tamil Brahmin. In fact, there is a going feud among Telugus and Tamilians as to whether I'm a Tamilian or a Telugu. Okay. So let me end that question once for all. I'm a fourth generation Bhagyanagari Tamilian. Okay. So I come from Bhagyanagar, which is otherwise known as infamously Hyderabad. And as far as we are concerned, the tradition is that the father's first name's first letter becomes your initial. Right. Okay. So J is for my father's name, and therefore it is J Sai Deepak. Okay. Right. So most people actually in this part of the country, they get flummoxed at the particular order because they call it Sai Deepak J, Sai J Deepak, J Sai ye ban jata hai. So in the south, it is J Sai Deepak. Sai and Deepak are not the first name and the last name. They are two first names. And J is my last name, which becomes my initial. All right. I've seen that with a lot of my Tamram friends, so acquainted with that. Starting today, I mean, of course, we're going to be talking about your bestseller, which has been like topping the charts in the last 1 year. And we are at the cusp of your second book launching on Tuesday. So it's a great timing that way. Starting with the introduction itself, you speak on page number 1 itself that in the year 2004, you could observe that there was open hostility directed at specific Indic sub-identities, especially in academic campuses. Now, this is very unique because, being products of consuming knowledge from, the news from the likes of communist portals, to us also certain civilizational truths started making sense only a few years back. But what is it that you could see all this in 2004 itself, where a lot of us were still under a lot of propaganda and you had a particular government who drove the narrative? So what is it that you could see a decade before itself in 2004? So the thing is, I'm a kid of the 90s. So if you ask me what are the landmarks that have shaped my thinking significantly, I was 7 years old on 6th of December, 1992. Okay. Then there were riots in Hyderabad where it was difficult to get even a packet of milk because of massive curfews. And old city of Hyderabad is almost 50% of the city of Hyderabad, both in terms of size and population. Okay. So there were massive disturbances. Okay. And the reason it became particularly painful was because it is in December that we have the festival of Kartika Masam, which is a specific month which is celebrated by most people in the south and even in the north. Invariably, it would coincide with what they call the Black Day. Okay. And we would not be allowed to burst firecrackers. Okay. I have lived in Muslim-dominated localities of Hyderabad. Okay. Where we would not be allowed to celebrate either Bharat's victory let's say in cricket, and there would be firecrackers burst at the victory of Pakistan. And we were heavily outnumbered. If I would come out as a child, and this would be in the year 95, so I was 10 years old, if I would come out to burst firecrackers, not for, let's say, the cricket victory or anything else, but to celebrate our festivals, we'll be say, bhago yahan se, ghar ke andar bhag jao, ye hamara kala din. Okay. So this has happened. So then followed by that was, of course, the Kargil War. Okay. And people of Hyderabad, at least the conscious ones, would tell you of the treatment received when the bodies of soldiers were coming to Hyderabad. And followed by the Kargil War in 2001, September 11th, there was a particular library which I used to frequent, run by a Muslim gentleman. It was called the Khan Library. And this is very close to, and there is no need for me to even fabricate facts here.
There is a place called Kishore Talkies. Right next to it was the Khan Library previously. It doesn't exist anymore. And there is a mosque close to that particular library. Okay. Huge mobs had gathered on 11th of September 2001. Okay. And in fact, unnecessary conversations. We are wondering, what has this got to do with the people here? Okay. हमने तोड़ दिया, हमने कर दिखाया, अंदर जाके घुस के मार दिया. This was the language that we heard. Okay. So 2004 was not a sudden change. It was not as if I was suddenly becoming aware of my identity and the problems here. We have witnessed a lot of things as children. And dare I say this, and I'm sure you'll be able to relate to this, the children of the 90s are the ones who are currently leading the Indic Renaissance. Because we are much more historically aware. We are much more conscious of the issues on the campus. We have faced a lot of this in different parts of our, let's say, at different, phases of our lives at different places. So in 2004, you have to realize that the India Shining campaign bombed and flopped like nobody's business. Okay. Contrary to the hype which was generated, the failure was extraordinary. Okay. Although the difference between the number of seats that the Congress and the BJP won wasn't too much. Okay. But itna hype generate ho chuka tha, it almost bombed like the Bengal election campaign of the BJP. That is the closest example that I come to. Okay. Now, who was the partner of the BJP in Tamil Nadu? Jayalalitha, ADMK. Okay, AIADMK. She had lost in all 39 constituencies. Okay. When she loses, her so-called Brahmin identity becomes the focus of the loss. Yeah. Because she comes from a family of Mysore Tamil Iyengars. Okay. And therefore, at the time of loss, it becomes very, very critical that the Brahmin identity becomes the focus of attention. Prior to that, or maybe just after that, I think when I was in engineering only, on the day of Deepavali, the Shankaracharya of Kanchi Math gets arrested on Diwali, ultimately to be acquitted of the framed and trumped up charges. As followers of Kanchi Math, we were all saddened. For us, it was much more than the Black Day, because a 2,500-year-old institution was dragged in the muck by a so-called Brahmin who was in power. So when people say that Brahmins voted for Jayalalitha, they don't understand. We certainly held her to account for all this. And importantly, the Kanchi Math has never been just a Brahmin following institution. Muslims visit the Kanchi Math. Most people don't know this. So under the previous Mathadipati, or the previous Mathadipati, Swami Chandrasekharan Saraswati, was known as the Mahapariva, who is known to have contributed to Article 26 of the Constitution. Okay. When Muslims would visit, he would not offer the kumkum or the vibhuti, because he would offer the sandalwood, because sandalwood is particular for Muslims in the south. Okay. So he would say, you don't have to change your ways. Here is the chandan. Aap chandan lagaiye. That would be the tradition there. Okay. So considering that, we were the product of this entire generation. So in 2004, ADMK lost, Mr. Vajpayee lost, and those who were vocal about all of this on the campus, we had very severe repercussions on the campus. Okay. So, mera Upanayan Sanskar tab tak hua nahi tha, so there was no Janayu to pull off. Otherwise, that would have happened. Okay. But since I would wear the Vibhuti or the Tika very, very prominently, they would come and wipe it off. Nasty, vile, vulgar chants against Brahmins, or let's say Hindutva-vadis, now both not necessarily being the same. Okay. And since I had grown up in Hyderabad, I don't share the silence of the Tamil Brahmin community in Hyderabad, and I'd be very vocal about it. Because the go-to response in Tamil Nadu was to shut up because you're outnumbered. पहले आप 6% थे, जो आपका maximum population था, वो घट के 3% हो गया, अब उससे भी कम है. Okay. The exodus of Brahmins from Tamil Nadu is a lesser known aspect of Hindu genocide, which was undertaken by the DK and its successor DMK. So with all this history, 2004 was very, very traumatic. Right. Okay.
Now, that's when I ultimately realized that here is an instance where we are fighting amongst ourselves despite being members of the same community. Since when did this fissure start? And who is responsible for contributing to it? And has this always existed? Has this animus between, let's say, these strands of the Hindu community always existed? These were my questions. One of the things that I chose to do was not to be a mute spectator who reads the Hindu and whines about the Hindu. Okay. And I wanted to actively contribute to it, but with some qualification. And therefore, the move towards law ultimately as a choice of career. So 2004, according to me, was, if not it was not an overnight change, but it was certainly a tipping point. दीपक, मेरा जो प्रश्न है वो आपके बुक पे है। जी, आपके बुक में पेज नंबर 10 पे आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है, जो हम सब कहीं ना कहीं जो भारतीय हैं वो सुनते भी रहते हैं। जी, बेसिकली जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, वो एक तरह का कृत्रिम उत्पाद या सिंथेटिक प्रोडक्ट, जो आपने लिखा है, उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म का है। यानी इसकी एक अपनी आइडेंटिटी या कॉन्शियसनेस पहले से थी नहीं। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की वजह से हम एज एक कंट्री एग्जिस्ट करते हैं। बट आगे उसके आपने जो बात लिखी है कि इसको सपोर्ट करने का जो आर्ग्यूमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रूटेड है काफी, जिस वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन काफी एक बैटल फील्ड बन जाती है। तो ये आपकी जो पूरी किताब है, लगता है इसका उद्देश्य ही इस परसेप्शन को या इस आर्ग्यूमेंट को एक्चुअली चैलेंज करना है। तो आप प्लीज हमें थोड़ा सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि आप क्या यहाँ पे कह रहे हैं, क्या बात हमें समझा रहे हैं। तो मैं आपको 2-3 रेफरेंसेस दूंगा जो आपके दर्शकों को समझ में आएगा। तो सैफ अली खान के 2 इंटरव्यूज है बरखादत के साथ। ओके, I was just thinking about the same. Thank you, because then the reference becomes immediately clear. There are 2 interviews, और एक इंटरव्यू में आई थिंक वो करीना कपूर के साथ है, और जहां से उनसे पूछा जाता है कि आपके लिए इस्लाम क्या है और मुस्लिम कल्चर क्या है, तो उनको सिर्फ 3 चीजें याद आती है। एक है आर्किटेक्चर, दूसरा है खाना, और तीसरा है फेस्टिवल्स। उसके अलावा उनको भारत में इस्लाम के कल्चर के बारे में और कुछ याद नहीं आता है। ओके, एंड दिस कमिंग फ्रॉम द स्काई ऑफ द पटौड़ी फैमिली, which has its connections with the Nawab of Bhopal. Okay, so इनके इतने गहरे यहाँ पे connections हैं, और इनको सिर्फ यही याद आता है, and they don't realize what kind of contributions have been made to the other aspects. And एक दूसरे इंटरव्यू में जब इनसे पूछा जाता है कि भारत के बारे में इनकी सोच क्या है, धारणा क्या है, तो ये कहते हैं that भारत तो ब्रिटिश के पहले था ही नहीं। Exactly, yes. And he specifically says that Bharat is the product of the British man's conscious effort to stitch the country together. So जब आपके निजी आइडेंटिटी के बारे में बात आती है, आप इतने सॉफ्ट और शुगर कोटेड कर देते हैं, और भारत के बारे में जब आते थे तो आप ये कहते हैं इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, राइट? और 47 के पहले तो ये था क्या, राइट? तो इसके 2 प्रॉब्लम्स हैं। 1, कि आप भारत को, you think of Bharat as the benign product of colonialism, in fact. Okay, एक इतने बड़े दर्दनाक हादसे से आपको लगता है कि भारत निकला है। दूसरा, आप हिस्ट्री समझ ही नहीं पाए हैं, because if you look at, let's say, the creation of Germany, the Germanic identity preceded the creation of Germany. The unification of Germany, I think in 1871 by Otto von Bismarck, it was effectively the product of the existence of an identity before. The Pakistani mindset precedes the creation of Pakistan. Therefore, एक धारणा या सोच पहले होती है, उसके बाद आप सोचते हैं कि इसको पॉलिटिकल आइडेंटिटी कैसे दिया जाए। लेकिन फिर भी भारत के संदर्भ में यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है that Bharat as a political entity, not just a civilizational entity, has existed. एंड इसके लिए अगर आप लेट्स से प्रमाण के लिए मांगेंगे या सबूत मांगेंगे, देन वेद जो है ये प्रमाण है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड भारत एज ए सिविलाइजेशन, बिकॉज इट रिकॉर्ड्स आवर जर्नी। 11 अगस्त को जब रक्षाबंधन हुआ था इस बार, यूजुअली रक्षाबंधन के टाइम पे क्या होता है कि जो
जनेऊ पहनते हैं, जिनको द्विज माना जाता है, वो उस दिन अपने जनेऊ को बदलते हैं. दैट इज द ओनली टाइम यू आर अलाउड टू चेंज इट. वरना यह तभी उतरेगा जब आपका क्रियाकर्म होगा, तब तक ये आपके बदन से नहीं निकलेगा किसी भी हालत में. So imagine the seriousness of cutting off a sacred thread when a man is walking. Okay, it's as bad as, let's say, pulling off a turban of a Sikh, or even worse for that matter. Okay, so when we do this, ये जो ceremony होता है, it's not a function, it's a ceremony. We actually speak of three things: Jambudvipe, Bharatakhande, Bharatavarshe. Jambudvip is that entire continent, and ultimately it is said that it is because of the jumbled trees, which is why Jammu gets its name from. That's where the origin of Bharat is. इसीलिए कश्मीर और जम्मू भारत के संस्कृति के लिए इतना important, because it is part of the Dweep. Then Bharatakhande, which is speaking of a land mass. Then Bharatavarshe. Varshe is a reference to a political entity, which is identified by civilization. It has been going on for thousands of years. It is an unbroken tradition. Despite Islamic invasions, despite Christian conversions, this has been going on. Therefore, when you say this, and there was another interview, I think, where Tarun Vijayji was there on NDTV, and there was this Christian anchor. I forget her name. She has a bob cut. Okay. So she basically says, Mahabharat to epics nahi hai, it's not even an epic, it is a fantasy. How can you think of it as history? ओके, ये आपके मुंह से निकल रहा है किसी और के बारे में, और आपका ये मानना है कि हमारी जो इतिहास है वो पूरी तरह से इट इज मिथ. यू हैव रिड्यूस्ड इट टू मिथोलॉजी. इतिहास इफेक्टिवली ट्रांसलेट्स टू दिस इज हाउ इट हैपेंड, thus it happened, and you're telling us that it's all mythology. And when you say all of this, the broad notion that you've effectively created is everything that we believe as a community is the product of imagination. It's a figment of fiction. तो इसको मुझे अगर मैंने वेदों से शुरू किया होता इस बात को, तो लोग कहते भाई फिर से चला गया ये 2000 साल पीछे, 5000 साल पीछे. तो मैंने कहा चलो देखते हैं, जिस पुस्तक को लेके आप रोज मथा टेकते हैं उसी से देखते हैं कि यहाँ पे बोला क्या गया. संविधान कहता है, लेट्स से आइन कहता है दैट भैया दिस इज इंडिया, दैट इज भारत. तो भारत को इसमें जोड़ा क्यों गया था? तो जिस स्क्रिप्चर से आपको इतनी नफरत है और घृणा है, विच इज पुराण और वेद, उसी के बेसिस पे भारत को आर्टिकल 1 में इंक्लूड किया गया. इसीलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को वहां पे इंक्लूड किया था. लेकिन मैंने इस बात को वहीं पे रोक दिया था, क्योंकि आर्टिकल 1 से इतना तो साबित होता है कि ऐसे कुछ तो लोग थे जिनका ये मानना था कि भारत इंडिया से बहुत ही प्राचीन है और हमेशा से रहा है. लेकिन क्या बाकी का जो संविधान है उस धारणा को आगे लेके जाता है या नहीं ले जाता है? दैट विल बी डिसाइडेड एट द एंड ऑफ द ट्रिलॉजी. सो आई एम एट द वेरी लीस्ट सेइंग दैट देयर इज सम डिग्री ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस दैट इंडिया की पहचान या परिचय भारत ही है. दैट्स द पॉइंट. Building upon that, Jay, you speak on page 14 about your admiration for Leonine civilization. You can address me as Sai, simple. So, okay, Sai. Building on that, on page 14, Sai, you speak about admiration for Leonine civilizational icons like Swami Vivekananda and Sri Aurobindo. And you say that it was clear to you that recasting Bharat in the mold of West would kill its originality and character, making it a mere vassal of the West. That too, after the European colonizer had left its shores. This would be a tragedy of incalculable proportions for which we would have no one to blame but ourselves. So if you could just elaborate a little on that. तो उसके अगले पैराग्राफ में मैंने डॉक्टर बाल गंगाधर और रूवर का नाम लिया है. जी जी. तो इनके कामों में आपको ये एक कॉमन थीम नजर आएगा, जहां पे ये कहते हैं दैट आप चोर को कुछ हद तक ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं. ठीक है, अगर दूसरी बार उसके जाने के बाद भी आपने अपना दरवाजा खुला छोड़ा और आप अपने आप को चोर के नजरिए से देखते हैं, ओके, तो चोर को आप उसके बाद जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. देयरफॉर उपनिवेशवाद इज colonialism, उपनिवेशिकता is coloniality, which is मानसिकता. The ta is a representation of mindset in Sanskrit and Hindi. So we are looking at Upaniveshikta and not Upaniveshwad.
उपनिवेशवाद की पैदावार जो है इज द पॉलिसी, बट उसका जो मेंटालिटी है दैट इज कॉलोनियलिटी. सो इटी ता आर द synonyms here, they are the पर्यायवाची. So there they very clearly say, वो तो जा चुका है अभी, ठीक है, अब किसका रोना? Why are you crying now? Who is responsible for the change now? Why haven't you changed? You haven't changed because the Gore Sahib has left, leaving the Brown Sahibs here. So the analysis of coloniality is the analysis of this creature, this jantu called Brown Sahib. इसको पैदा किसने किया है और ये अपने मानसिकता को कैसे बरकरार रखा है? थ्रू एजुकेशन, थ्रू लैंग्वेज, थ्रू पब्लिक डिस्कोर्स, थ्रू पॉप कल्चर. दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. साई दीपक, आपसे जो मेरा अगला सवाल है वो इसी जो आपने बात की है कि उपनिवेशिता मतलब जो एक माइंडसेट है, उस पे मेरा जो सवाल है आपके आपसे कि आपने एक इसकी स्कॉलरली डेफिनेशन भी दी है पेज नंबर 26 पे, जो बेसिकली हम सब अपने एकेडमिक बुक में भी पढ़ते हैं कि कुछ लोग होते हैं एक देश से जो दूसरे देश में जाके उनकी सोसाइटी में कॉलोनी बसा लेते हैं, बट उनके खुद के देश से जो उनका एक बॉन्ड है वो उसे खत्म नहीं करते, और जिस देश में उन्होंने कॉलोनी बसाई है वहां से जो भी एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं अपने निजी हित के लिए या फिर अपने देश के हित के लिए. लेकिन उसके आगे जो आपने उसके 4 फॉर्म बताए, उसमें भी हम 2 फॉर्म तो फिर भी पढ़ते हैं, बट आपने जो बाकी बातें की हैं उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए सरल भाषा में, ताकि सबको समझ में आए. जी जी जी. देखिए, फर्स्ट मैंने कहा है एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म, जहां पे आप एक टेरिटरी को या फिर एक भूखंड को सिर्फ एक रिसोर्स मानते हैं. तो समझ लीजिए आप बाहर से हैं और आपको भारत से कोल चाहिए या गोल्ड चाहिए, तो आप सिर्फ भारत को एक माइन के तरह यूज करते हैं. तो ये एक इट बिकम्स एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म. सेटलर कॉलोनियलिज्म ये होता है कि आपका पैर जो है या आपके पैर जो है 2 नावों पे होते हैं. ओके, एक है जो आपकी आइडेंटिटी जो उस देश के बाहर होती है, और दूसरा है जो आपका प्रेजेंस जो उस देश के अंदर होता है. ओके, तो आप अपने आप को भारतीय कभी भी नहीं मानते हैं, लेकिन आप रहेंगे भारत में और भारत का इस्तेमाल करेंगे आपके परिचय को आगे बढ़ाने के लिए जो भारतीय नहीं है. ओके, तो ये हो जाता है सेटलर कॉलोनियलिज्म. ओके, then you have surrogate colonialism where effectively one group is used as exploiters on behalf of the other in one particular sense. Therefore the concept of surrogacy becomes, let's say, very clear key. You use one foreign element to exploit another foreign element, with the third foreign element being the exploited and the second foreign element being the surrogate exploiter. Okay, तो उसका जो उपभोक्ता है वो बाहर है, जो करता है वो भी बाहर है, और जो भुगत रहे हैं वो अंदर है. ओके, इंटरनल कॉलोनियलिज्म इज एक संस्कृति या फिर एक भाषा बाकियों पे हावी हो जाती है डिस्पाइट द फैक्ट दैट सभी एक ही संस्कृति के हैं. ओके, तो भारत के अंदर मैं किसी भी सेंटिमेंट को हानि नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन नॉर्थ में एक आइडेंटिटी है जो बॉलीवुड पे पूरी तरह से हावी हो चुकी है और बाकी आइडेंटिटीज को खा चुकी है. ओके, सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में उनका मानना है कि एक आइडेंटिटी बाकियों पे हावी हो रहा है. साउथ में कुछ लोगों का मानना है कि एक आइडेंटिटी है जो बाकियों के बिहाफ पे बात करता है. ओके, दैट इज इंटरनल कॉलोनियलिज्म. ओके, विच इज टू से एक ही जाति के अंदर एक प्रजाति दूसरे पे हावी होती है. दैट वुड बी द वे ऑफ लुकिंग एट इंटरनल कॉलोनियलिज्म. माय एंटायर assessment of Bharat's history has been more from the perspective of 2 waves of settler colonialism that it has witnessed and is continuing to experience. Right. Which is to say, बाहर के लोग अंदर आए हैं और उन्होंने अंदर के लोगों को दबाया है, और ये रेस की बात नहीं हो रही है, ये मानसिकता और सोच की बात हो रही है. क्योंकि भारत में पहले भी बाहर के लोग आए हैं, लेकिन यहां पे आके घुल मिल गए हैं जो भारतीय बन चुके हैं. ओके, माय
I could be wrong here, but there are examples where perhaps even Kanishka, for that matter, is seen as coming from those parts which are seen as parts of China or Tibet at this point. Okay, but हम कनिष्क को मानते हैं एक भारतीय राजा. Okay, or for that matter, several kingdoms, even in, let's say, Cambodia and all these places, we see them as part of the extended Bharatiya Sanskriti, as part of greater Bharat. क्योंकि ये संस्कृति की बात हो रही है, रेस की बात नहीं हो रही है. That is the primary distinction between Europe's approach to history and Bharatiya approach to history. रेस मायने नहीं रखता है, अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो मायने रखता है. Right. Sai, also you go on to say, now I'll go to page 42, you quote a acclaimed writer, scholar, according to Quijano. This is where the true genius of the European colonizer lay, not in the brutal economic and political repression of the native, but in successfully projecting his way of life as the aspirational ideal. Now, this is very interesting, Sai, because while one reads your book, there's so much that one starts relating, okay, this is where I was in life and all. And confession, coming from one of the top missionary schools of Pune, I would subconsciously look down upon anyone who I would felt that, yaar, ye Hindi mein gaali nahi, ye Hindi mein gaali deta hai. You know, he English mein deta hai, so he can be my friend. And it took me a lot of time to, you know, challenge that bias of mine, but that remains. Then I saw it a different way when I would go to, you know, Kashmir, and then I would see there people wanting to aspire speaking in Hindi, Urdu, you know, and they would look down upon that. And I felt, my God, this is so tragic at these relative levels. And that's where all of us, right? Urban kids have always wanted to be like that cool dude and friends and all. I'm not saying it's wrong, but at the same time, look down upon, and you know, it's funny. In the 90s, the one who would wear the more Western clothes in the Hindi film industry, they were aspirational, like the Shah Rukh Khans and all, and that's fine. But everybody would go and watch a Govinda movie, but they would just say कि हम नहीं देखते. And that's a very deep thing, because the guy was a brilliant actor, but it was more like, that's not cool, you know. But but at a very deeper level, it is actually very intellectual to dwell deep into that. So if you could speak about that aspect. Again, I'll give you 3 pop culture examples. Okay. सोनी ने तो 2 मूवीज को बहुत हिट किया है. एक है सूर्यवंशम और दूसरा है नायक. रोज चलते रहता है, किसी ना किसी टाइम आप देख लो, मिल जाएगा. Absolutely. And I typically have watched these movies only in the salon. Hair cutting के लिए जब जाता हूँ तभी मैं देखता हूँ. Okay, क्योंकि ये चलता रहता है. Everybody watches it. Now, when Anil Kapoor becomes the chief minister for that one day, and he enters the Vidhan Sabha, the assembly, what does he wear? He wears a trouser and a full sleeve shirt. It's a formal dress. Okay. इसका जो तमिल में जब आया था, Shankar, who's supposed to be among one of the most rooted directors of Tamil. Okay. This gentleman added a dialogue in Tamil, because that's where the movie was made from. He said, oh, finally we have an educated chief minister who's wearing a formal dress as opposed to veshti and shirt. Imagine, जब आज के लोग कहते हैं साउथ बहुत रूटेड है, बहुत हिंदू है, भैया ये भी तो देख लो. Okay, watch this. So, corruption is associated with the Bharatiya attire. Modern, forward, progressive thinking is associated with a shirt, with the Western attire. That is the success of the European colonizer. Okay. I'll give you a better example, and which is a much more painful example. A Telugu movie recently came out called Shyam Singh Roy. Okay. One of the deadliest movies made by the Christian missionary left, according to me. Extremely devastating. Brilliantly made, but diabolically made. Okay. So what they do is, the Brahmin, evil Brahmin, is the villain. Choti, Shikha, the bald head, sab kuch hai, traditional dress hai. The Devadasi culture is the focal point of the movie. Who comes and reforms this entire village? An educated Christian youngster who comes and saves the Devadasi from the evil Brahmin, to the point of effectively giving the impression that the Brahmin violates the modesty of the Devadasi in the temple, apparently. This is lifted directly from missionary literature of the 18th and 19th century. It is a direct lift from it.
But because we don't understand history enough, we don't realize that this was the very same allegation made in Greece and Rome before it was Christianized. To say that those temples are places of debauchery and sacred prostitution. That is the language that is imported subsequently for the Devadasi culture. Okay? And this movie, people were going gaga over, oh, kya movie hai, kya movie hai. And this is made in the Telugu industry, which made Bahubali and RRR. Because this shows the now growing infiltration of the left and the Christian Marxist, let's say, group in the Telugu film industry also. Tamil film industry has been completely taken over. Okay. The point I'm trying to make is that अब ये सिर्फ academics की बात नहीं रही, ये pop culture के representation में आ चुका है, which effectively shows the third layer of percolation. Starts with education, moves to politics, then Khan-Pan, finally visual representation, which is media. How many people are comfortable eating with their hands? Why is that a problem? I am. Exactly the point. It has now become something that you pay for only to eat at ITC Bukhara in Delhi. In every other place, you're asking for a cutlery. Okay? Therefore, according to me, the difference that I've tried to come out in the book is the invader or the colonizer who preceded the Christian European colonizer was brutal in his repression and was very, very visceral and direct in his repression. From the jizya to, let's say, destruction of temples, to molestation, to slave trade and everything, it was in your face. And therefore, the reaction was equally visceral and physical. He forced you to draw the sword and respond. Okay? The guy who comes later starts with the mantra of toleration, and toleration means I will tolerate you until you gradually convert. So the balkanization of Bharat from within in the northeast, in, let's say, in Kerala, now in Andhra Pradesh, in several parts of Tamil Nadu, in Kanyakumari district, in Tuticorin district, all these are representations of using the aspirational model for conversion. Right. That is the distinction. Then I also want to make the point that the subsequent Islamist movements adopted the very same strategy of the Christian European colonizer, and they started using the aspirational model as opposed to using the direct violence model. Right. That's where I gradually move, and that is what I'm showing through the second book. Sure. Amna, your next question. अब लोग ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि जिस तरह से इंडिजिनियस कम्युनिटी ने अपने इकोसिस्टम की रेस्पेक्ट की थी कि जितना लेना है उतना देना है। आपने अमेरिकन नेटिव कल्चर के बारे में भी बताया कि किस तरह से वो एक अर्थ को एक माँ के गर्भ के जैसे देखते थे कि उससे जो भी वो चीजें ले रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस, वो एक उसके प्रति उनकी एक श्रद्धा होती थी। जबकि जब उपनिवेशवाद का यही कहना था कि वो उसको एज अ रिसोर्सेज देखते थे इस्तेमाल के लिए, और यही एक्चुअली मानसिकता इसकी बीज है जो आज हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं बेसिकली। तो इसको आप थोड़ा और एलिब्रेट कीजिए और थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। तो इस संदर्भ में मैंने दो स्पेसिफिक इश्यूज को हाईलाइट किया है, इनफैक्ट 3: भाषा, परिभाषा और मानसिकता। ओके, भाषा के संदर्भ में मैंने ये कहा है कि भारत के संदर्भ में आप कभी भी हमारे जनजातियों को आदिनिवासी, मूल निवासी, आदिवासी मत कहिए। ओके, ये आदिवासी थे गोरों के लिए, हमारे लिए नहीं, ये हमारे हैं। ओके, for the Angrez and the Firangi, so to speak, this was an Adivasi because he chose to entrench the Aryan invasion theory. किसी भी हालत में ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कोऑप्ट करना है, तो उनको ये बोलना था कि आप गोरे हैं तो आप सेंट्रल एशिया से आए होंगे और आप हमेशा से विजेता हैं, तो अगर विजेता है तो आपको गोरा ही होना पड़ेगा क्योंकि विजेता सिर्फ गोरा हो सकता है। दैट लैंग्वेज हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड and in that process they cut us off from the rest of the community, and ये माना जाता है कि क्योंकि हम कॉलोनाइजर्स हैं, आप भी कॉलोनाइजर्स रहे होंगे, तो कोई तो होगा जो यहाँ का है, वो है आदिवासी। इस तरह उन्होंने आदिवासियों को पूरी तरह से, लेट्स से जनजातियों को पूरी तरह से कट ऑफ करके उनको कैसे क्रिश्चियन कन्वर्शन का लेबोरेटरी बनाया, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है विद नंबर्स। जैसे भिखारी अपने लिए ट्रैफिक जंक्शंस चुन लेते हैं, इन्होंने ऐसे भारत का बंटवारा कर लिया था कि ये टेरिटरी इस लूथरन चर्च के लिए है, ये टेरिटरी जो है एंग्लिकन चर्च के लिए है, ये टेरिटरी जो है प्रोटेस्टेंट चर्च के लिए, ये बंटवारा हो गया था।
तो भारत इनका बैटल ग्राउंड बन गया था फॉर कॉम्पिटिटिव एवेंजलिज्म. So enlightenment did not create respect for indigenous communities. It created benign condescension कि इनको हमें बचाना है, इनका उद्धार करना है. और उद्धार तभी होगा जब इनके अंदर आत्मा आएगी. आत्मा तभी आएगी जब ये ईसाई बनेंगे, क्योंकि जो नॉन ईसाई है उनके अंदर आत्मा ही नहीं है. जो पत्थर को पूछते हैं या नेचर को पूछते हैं, उनका मानना है कि दे आर सोललेस और दे हैव डार्क सोल्स. तो जो इस्लाम की रोशनी की बात होती है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी इज लाइट इज स्पोकन ऑफ, कि हम आपको उद्धार करेंगे और हम आपको उठाएंगे, अपलिफ्ट करेंगे. दैट इज हाउ दे गो अबाउट इट. इन द प्रोसेस क्या हो जाता है, आपका जो नेटिव थिंकिंग है वो ये कहता है कि मनुष्य सबसे ऊपर नहीं है, वो भी इसका भाग है. सो जो आज डिस्कशन होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल दैट नॉनसेंस, ये बेसिक इन्हीं का तो फिलॉसफी है जो आपने उनसे चुराया है. ओके. और इतने सालों से वो कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट के नाम पे हमें डिस्प्लेस करके उस पूरे रिसोर्स को खत्म मत कीजिए. Okay, like destroying the Amazon or the forests and so on and so forth. You should only look at the manner in which that racist Rudyard Kipling effectively represents Bharat full of rivers and jungles. आज वो एक rarity बन गया है to look at Bharat that way. I am not anti-development. Let me correct that notion. I am not anti-development. I repeat this ad nauseum. I am not a Luddite who says there can't be any progress. But progress के मापदंड को थोड़ा तो अब बदलिए, क्योंकि ये जो एंडलेस ग्रोथ का जो प्रोग्रेस है वो व्हाट इज द पेस एट व्हिच इट्स कमिंग एट. आई जस्ट वेंट फॉर अ 5-day ब्रेक टू शिमला. ओके. इट इज एज हॉट एज दिल्ली, व्हिच वाज नेवर द केस बिफोर. पीपल नीड फैंस देयर. जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं. किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से आई थिंक देयर आर अबाउट 6 पावर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर डिस्ट्रॉइंग द इकोसिस्टम ऑफ द प्लेस. In Himachal Pradesh, people used to survive on the brooks and the waterfalls, जो छोटे छोटे हर जगह पे होते थे, छोटे झरने पानी के लिए. वो झरने रुक गए हैं क्योंकि आपने वहां पे ये डेमोलिशन कर करके उसको भी तोड़ दिया. Okay, so those places where there was no water scarcity now has water scarcity. Most of the mountainous places, whether it's Uttarakhand और हिमाचल, थोड़ा बहुत तो लैंडस्लाइड हमेशा होता है जब भी थोड़ी ज्यादा बारिश हो जाती है. लेकिन उसको वर्स किया है हमने अपने काम से, क्योंकि हम दिल्ली पे जो मापदंड लगाते हैं डेवलपमेंट का, वो हम उत्तराखंड में लगाना चाहते हैं और हिमाचल में भी लगाना चाहते हैं. ओके. इन द प्रोसेस द लोकल्स आर टेलिंग मी एप्पल की इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, आमंड्स की इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है. जो आपका लोकल लेट्स से बिजनेस मॉडल है, जो पर्यावरण पर निर्भर है, उसको कायम भी रखता है और आपके लेट्स से जीविका को भी देख लेता है, उसको आपने पूरी तरह से तोड़ दिया. राइट. And there are very few places where you can go with, let's say, kache roads. You have massive 4-lane ways, 6-lane ways coming about. Just travel from Chandigarh to Shimla. I go there almost once in 2 months for arguments in the Himachal High Court, and it's a painful journey. It's a very traumatic journey, क्योंकि सोलन को पार करते ही आपको दिख जाएगा कि हमने पहाड़ों को पूरी तरह से तोड़ रखा है. Okay, and we are putting artificial embankments there, which are not able to bear the weight of the soil, and it then starts. Okay. See, the point is, you keep increasing road access other than military access because it is on the border, it is a sensitive state and all that. Then you are encouraging more city dwellers to come there in all their vehicles. And you're encouraging locals to create more hotels, more stays. Okay. And all of us get sucked into the same trap. And once you're part of that and your livelihood becomes dependent on that, आप इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे? उम्मीद ये थी कि उत्तराखंड के बाढ़ के बाद कुछ तो दिमाग आएगा, कुछ तो मतलब सोच आएगी, लेकिन वो बदला नहीं है अभी तक. एंड ये किसी एक गवर्नमेंट पे ये इल्जाम लगाना बेकार है, सभी ये करते. विकास के मापदंड आप जब तक थोड़ा बहुत नहीं बदलते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम होगा. इन एडिशन टू दैट, ये जनजाति को अगर आपने आदिवासी मूल निवासी बोलना शुरू किया, तो आप after the British man has left, you are mainstreaming Aryan invasion theory as part of not just your academic discourse, but as part of your development discourse. Right. Very interesting. Sai, coming to page number 64, what was very interesting for me as a reader was that this whole childhood notion of mine
of Christopher Columbus, one of the greatest voyagers. You turned it on its head with arguments rooted in facts and writings from that side, that the whole exploration had a strong underpinning of his, basically to do with his religious outlook of how he had to spread the faith and, civilize the savage polytheists. That was very interesting, and I would want the readers to know that, because you have I don't know if anybody has challenged that in the mainstream before that, with such academic vigor. So the best part is my book is as unoriginal as it gets. All right. क्योंकि already इसका literature बहुत है. Okay. प्रॉब्लम ये है कि हमने भारत में एक दीवार खड़ा किया है कि ये लिटरेचर यहाँ नहीं आएगा, और जो यहाँ पे आएगा और उसको लेके आएगा उसका हम बहिष्कार करेंगे. दैट इज द एकेडमिक गार्डियनशिप. और जिनको ब्राह्मणत्व से इतना तकलीफ है, ये हैं आज के सो कॉल्ड कास्टिस्ट्स, ओके, हु आर प्रिवेंटिंग द एक्सेस टू दिस लिटरेचर. तो माय एंटायर स्ट्रेटजी बिहाइंड द बुक हैज बीन वेरी सिंपल. ठीक है, भारत में जो इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं उनसे आपको इतनी घृणा है क्योंकि आपको लगता है ये एंटी माइनॉरिटी है, ओके. तो जब आप इसको एंटी माइनॉरिटी देखते हैं तो आप कॉलोनाइजेशन का पूरा जो पैमाना है वो आपको समझ में नहीं आता है. तो आप उसके स्केल को और थोड़ा बड़ा कीजिए और अपने आप से ये पूछिए कि भैया भारत के बाहर ऐसे मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, और अगर उन मूवमेंट्स के धारणा को भारत के अंदर रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है तो आपको इसमें एंटी माइनॉरिटिज्म क्यों नजर आता है? व्हाई डोंट यू सी दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट व्हाट इज लेफ्ट ऑफ अस, राइट? सो द आइडिया वाज टू प्रेजेंट दैट लिटरेचर. नाउ व्हाट हिंदूज, आई वुड से, और भारतीय सो टू स्पीक, हैव टू लर्न is the African American success in talking about their pain and their trauma. इसके बारे में मुझे डॉक्टर इंदु विश्वनाथन ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था. She was the one who said, you know the Indian system fairly well. अब आप उस तरफ देखिए और कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करने की कोशिश कीजिए. So that is how I was pulled into that particular literature, and then once I read it, I said, मुझे यहाँ पे अपने व्यूज को रखने की कोई जरूरत है ही नहीं, मुझे सिर्फ उस लिटरेचर को यहाँ पे रखना है. और अब मैं कहूंगा तुम डील करो इसके साथ. वकील का काम होता है प्रमाण आपके सामने रखना. प्रमाण चिल्ला रहा है, फिर भी आप उल्टे नतीजे पे आएंगे तो लोग आपको जज करेंगे, प्रमाण को जज नहीं करेंगे. ओके, सो द एंटायर पॉइंट वाज, वन ऑफ द लेट्स से रिस्की स्ट्रेटजीज बिहाइंड द बुक वाज, प्राइमरी सोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करो पूरी तरह से, इवन टू द पॉइंट ऑफ मेकिंग इट अ डिफिकल्ट रीड. That's what you've done in the case of Christopher Columbus. Here's what happened was, I had sent the book for review by Vikram Sampath, asking him to take a look at it. Okay, he's a very dear friend, and one of the things that he said was, Sai, you have taken a huge gamble here. पता नहीं आपके एडिटर ने आपको बताया कि नहीं, लेकिन इतने सारे एक्सट्रैक्ट्स आपने डाल रखे हैं. तो मैंने कहा, it's a calculated gamble. I completely appreciate the feedback and I think you're right. But मैं इस बार I want to take the manner of history presentation back to the old school. Because if you read R.C. Majumdar और जादूनाथ सरकार, वो प्राइमरी सोर्सेस को अपने बुक में पूरी तरह से रेप्लिकेट कर देते हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये किसी का इंटरप्रिटेशन है या ये सच है. Okay. The style of writing of history subsequently under Romila Thapar and others has been psychoanalysis. मतलब आप बैठ के ये सोचेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं होगा. Okay. So the idea was to say, here is he is talking. मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद कह रहा है, मैं आऊंगा, आपका धर्म परिवर्तन करूंगा, क्योंकि तभी आपके अंदर आत्मा आएगी, तब जाके आप सिविलाइज होंगे. ये बोल रहा है. So the words such as old world, new world, Christian world, third world, first world, ये सब कहां से आ रहा है? It starts with the division of the world between the Spanish Empire and the Portuguese Empire for colonization. That's exactly why that entire letter was reproduced, जहां पे भारत की बात हो रही है. और मैं ये लेटर पढ़वाना चाहता था सैफ अली खान से. आप पढ़ लो, आप कह रहे थे कि भारत है ही नहीं, 15वीं सेंचुरी में आदमी बात कर रहा है. I think कि only सैफ अली खान को blame करना is I mean injustice, because ये mostly मैं तो जहां से सुनते आई हूँ, बोलने वाला हिंदू ही होता है. 100%, you're right. Yeah. So जब हिंदू ने ही बोला तो मुझे तो लगता है हिंदू ही बोल रहा है कि उसका रिलीजन मिथोलॉजी है, हिंदू ही तो बोल रहा है. For me it is not. You're right. तो ये बुक जो है, ये रेड पिल है, किसी और के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए है.
कि आपके अंदर जितने भी ये बेकार के नोशंस हैं, सेक्युलरिज्म एंड ऑल दैट, कम आउट ऑफ इट. प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एंड ऑल दैट. The truth bombs here in this book and the literature is first for the Hindu child or the Hindu parent, that read this before you feed poison to your children. मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साई दीपक, मुझे पर्सनली ये सबसे कंट्रोवर्शियल लगा, जी. बिकॉज दिस इज लाइक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर इसको टर्न पॉइंट माना जाता है. जैसे कहते हैं कि एज ऑफ एनलाइटमेंट, या अगर हिंदी में बोले पुनर्जागरण. तो जब चर्च का स्टेट से, और जिसको हम एक्चुअली आइडियल मान के चलते हैं, इवन पीपल कीप सेइंग टू मुस्लिम सोसाइटी कि दे शुड फॉलो दिस आल्सो. तो चर्च और स्टेट का जो एक सेपरेशन हुआ, यही रियल सेक्युलरिज्म है. बट आपको मैंने पहली बार देखा है कि आपने इसके अगेंस्ट एक तरह से आर्ग्यूमेंट किया है कि ये सच्चा सेक्युलरिज्म नहीं है. तो प्लीज आप वो समझाएं हमें. मैं ये नहीं sorry, just a personal thing. You know, for the Amana, whenever we have our heated discussions, this is a very dear thing to her. Na? She always tells me, see how great the separation, and always talks about that. So I just want to add that personal thing to it. तो आमना जी, आपके लिए ना दूसरे पुस्तक का पहला चैप्टर जो है बहुत ही पसंद आएगा. ओके, which is to say, I have compared Shah Waliullah Dehlavi's understanding of the division between the world of the ulama and the world of the kings, and I have compared that with the theory of two kingdoms, which is the product of the Protestant Reformation. कि दोनों के बीच में कैसे सिमिलैरिटीज हैं और कैसे डिफरेंसेस हैं, और इस्लाम में क्रिश्चियन सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है. I have used the Khilafat as a movement to explain all of that, where they effectively said ये डिविजन हमारे अंदर हो ही नहीं सकता है. एंड हाउ उनको सबसे बड़ा धक्का लगा, नॉट फ्रॉम अंग्रेज बट फ्रॉम केमाल अतातुर्क, ओके, हु इफेक्टिवली सेड हो सकता है, मैं करके दिखाता हूं. ओके, एंड व्हेन ही फाइनली अबॉलिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैलिफेट फ्रॉम टर्की. वो पूरा जो इतिहास है मैंने कैप्चर कर रखा है विद कांस्टेंट कंपैरिजंस टू द फर्स्ट बुक, बिकॉज फर्स्ट बुक इज माय सो कॉल्ड मास्टर कॉन्सेप्चुअल टेम्पलेट, जिसको मैं इस्तेमाल करता हूं बाकी के पंक्तियों को जोड़ने के लिए, okay, through specific instances. Now, to answer your question, again, in regards to the Enlightenment, my book is again unoriginal because I've cited two specific authors. One is Jacob de Roover, two Balagangadhar, but in addition to that, I have referred to German scholars and English scholars of law and Enlightenment, who are basically saying nobody was fighting for de-churchification of the Christian society. They were fighting for better and enlightened churchification of the Christian society in Europe. और इनके जितने भी सिद्धांत और मूल्य थे, they were secularized versions of Christian values. ये वो खुद कह रहे हैं, and they're explaining how it works. Okay. Secondly, Khalid in his question raised a very pertinent point कि सच्चा secularism क्या होता है. मैं कह रहा हूं कि सच्चा सेक्युलरिज्म सेक्युलर है ही नहीं, वो अपने आप में एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है. ओके, तो इसका मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन ये दिया है, इट कम्स फ्रॉम द नीड ऑफ द चर्च टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी फ्रॉम द किंग एंड टू टेल द क्रिश्चियन राजा, तुम राजा हो सकते हो लेकिन मेरे नजर में तुम रंक ही रहोगे क्योंकि तुम मेरे नीचे आते हो इस स्पिरिचुअल पायदान में. ओके, तो क्रिश्चियन सोसाइटी जो है 4 ग्रुप्स में बढ़ जाता है. सबसे ऊपर हो जाते हैं द मंक्स, द मॉनेस्ट्रीज, नॉट इवन द चर्च. ओके, क्योंकि मंक्स जो है they were practicing Christian values better than the church when the church was completely embroiled in corruption scandals and sex scandals. Okay, तो लोगों के नजर में ये हो जाता है कि परमात्मा के सबसे करीब जो है वो है मंक्स, उसके बाद आते हैं चर्च, उसके बाद आता है राजा, उसके बाद आता है लेटी मीनिंग कॉमन बिलीवर्स. ओके, देन हाउ द चर्च गोज अबाउट appropriating the monks as part of their order, क्योंकि 2 पावर सेंटर्स नहीं हो सकते स्पिरिचुअलिटी में. तो उनका यह मानना है कि अगर मंक्स के पास सब चले गए तो चर्च का मोनोपोली जाएगा कहां, बिकॉज मंक्स वर लीडिंग द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन थियोलॉजी विच वॉज अंडरमाइनिंग द मोनोपोली ऑफ द चर्च. ये थोड़ा थोड़ा करके ये रिफॉर्मेशन की ओर तब से जा चुका है. दैट इज फ्रॉम द 12th century ये हो रहा था थोड़ा थोड़ा करके. फाइनली देन व्हेन मार्टिन लूथर कम्स, then effectively he says to hell with it. Okay,
You can't be the ones issuing, क्योंकि आप पैसे लेके किसी को ये नहीं कह सकते कि आप किसी का भी रेप कर दो, ये हम इसको माफ कर देंगे, ऐसे नहीं हो सकता है. So the very system of confessions, the very system of grant of apologies and all that, everything was being questioned. Finally, after the Reformation, when you connect the dots between Catholic movement, then Reformation to Protest to Enlightenment, you will continue to see the very same thought process, except for the fact कि अब ये क्रिश्चियन वैल्यूज को यूनिवर्सल वैल्यूज कहना चाहते हैं. और जब आप एक लोकल वैल्यू को यूनिवर्सल वैल्यू करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, तो आप उसके रिलीजियस रूट्स को काटने की कोशिश करते हैं, so that more people accept it. I'll give you an example from the Muslim community. अब बात ये निकलती है that Allah means God. No, it means a specific deity is my position. Okay. You want to call it God because you want to expand the scope of its reach, so that more people accept it and see it as universal, and therefore everybody has to accept it. But I am saying it has a specific deity. There is a specific position there, that the only consecrated place in earth is the Kaaba. That's your position. In which case you can't take a secular approach. It is a very specific religious approach. It's a denominational approach. The very same point is being made towards Christianity, at least European Christianity, to say, you effectively are saying कि हम इस वैल्यू को उसके संदर्भ से निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं और इसका प्रोपगेशन करते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्रिश्चियन है, बस बात खत्म. लेकिन जब आप अंदर बात करते हैं एक दूसरे से, यू आर इफेक्टिवली सेइंग द वेरी सेम थिंग, एंड आपके पोजीशंस चेंज नहीं हो रहे विद रिस्पेक्ट टू सोल, आपके पोजीशंस चेंज नहीं हो रहे विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम सोल, आपके पोजीशंस ये चेंज नहीं हो रहे दैट वेदर एवरीबॉडी हैज एक्सेस टू हेवन. It was during Enlightenment that the position was even more concretized, that अगर हमें विश्व को बचाना है तो colonization पक्का करना पड़ेगा. The leading scholars of Enlightenment were the advocates of colonization. I've given that with their own language. सिर्फ उनमें और colonizers में सिर्फ एक ही मतभेद था, ये कह रहे उनको मार के मत करो, बाइबल पकड़ा दो उनके हाथ में, उनको मारो मत. So the entire point was, अगर उनको ये मानना है कि हम बेहतर है और हमारी जो जीवन प्रणाली है वो बेहतर है, मार के कैसे सिद्ध कर रहे हो, मारो मत, उनको समझाओ, उनको सिखाओ, उनको पढ़ाओ और धर्म परिवर्तन कर दो. So they clearly said, we will not use the sword, but we will use the sword of the Bible to initiate conversion in the spirit of the man. What is the difference? End result क्या हुआ? Is it a coincidence that Enlightenment was coinciding or overlapping with the peak of colonization? ऐसे कैसे हो सकता है? तो अगर ये सही है, तो Enlightenment के advocates और colonization के advocates के बीच में तो युद्ध होना चाहिए था. Where is the debate going on? कौन कह रहा था कि बाकी जितने भी colonized societies हैं उनके प्रतिनिधियों को हमें बिठाना चाहिए जब हम वैश्विक मूल्यों की बात करते हैं? मूल्य वो तय करेंगे और बाकी सारे लोग जो है उसका पालन करेंगे. जब ये पॉलिसी होता है तो ये कॉलोनाइजेशन ही है. इट इज इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन. व्हेन यू आर टेलिंग मी आई डोंट इवन हैव द डिग्निटी ऑफ शेयरिंग स्पेस ऑन द सेम टेबल वेयर द वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज इज बीइंग डिस्कस्ड, वेयर द क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज इज बीइंग डिस्कस्ड. सो इट्स नॉट अ वैल्यू दैट इज यूनिवर्सल, इट हैज बीन यूनिवर्सलाइज्ड, थोपा गया है सब पे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन universality of a value and universalization of a value. I am saying colonization led to universalization of a local value. That's very interesting, and that's actually given Amana a lot to think about. Fortunately, these are not my thoughts. I'm sharing what they are saying. Yeah, I think this can be a different subject in itself, and debate काफी लंबी हो सकती है. Right. So let's go to other question. Khalid, आप. Yeah. Sai, on page number 99, again, that got me to my, teenage days, which a lot of us get. I was 4 years at Melbourne, and I'm not saying a good section of them, but a certain section of them, if they would speak about India, and I always had this thing, I would, praise it, market it, I would say, it's been a great childhood. I've grown up with, friends from 6 major faiths, and it's a very normal thing. And I've never felt anything of that sort, and it's a fascinating place to grow. And then would come that one thing to puncture me always, but you guys are poor, how's the poverty, and but I've always believed in giving it back. So I remember once I was doing this night shift as a watchman, and
I said to him, but I feel sad for what you've done to Aboriginals here. Do you feel bad for that? And the guy turned red, you know. So you again mentioned that, and that, you know, it's always, I've seen that, and this is not a generalization of this, but it's a mindset thing that I'm tackling here, that ultimately they like that Indian more who is like ready to put those jokes on himself and self-depreciating to the point of this, and presenting self-loathing as some sort of, you know, enlightenment, whereas you can be comfortable saying these are our problems, but these are the things which are unique. Right. And you've spoken about the same thing, ki, you know, once they colonized us and then they say aap yaar kitne gareeb ho, and now, you know, you should come to our first world country standards, but you want to tell them, dude, weren't it your ancestors who did that? Correct. So speak about that, because a lot of people will relate to that. The pop culture reference, the success of comedians like Veer Das, if at all there is success, is attributable to this self-deprecating tendency through as far as the Indian consciousness is concerned. He is acceptable because he is willing to effectively show us in very poor light, which conforms to the stereotypes about Bharat outside. Snake charmers, पता नहीं कैसे इन्होंने rocket उड़ा दिया, गौ को पूछते हैं, पता नहीं ये कैसे करते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो ये कैसे करते हैं. Okay, these are the kind of jibes. Now, the best part of the literature that I've chosen is, मैं ये कह रहा हूँ, colonization का अगर विश्व भर में एक experience रहा है, क्योंकि उसके पीछे की सोच एक ही रही है, आपका ये मानना कैसे हो सकता है कि भारत का एक्सपीरियंस और भारत के संदर्भ में उसकी सोच अलग हो सकती थी? क्या भारत की पुण्य भूमि में आते ही उसका मतलब ये कह रहा है कि नहीं, भारत में ये नहीं करूंगा, मैं दुनिया भर में करूंगा, ऑस्ट्रेलिया में करूंगा, न्यूजीलैंड में करूंगा, माओरीज को मारूंगा, अबॉरिजिन्स को मारूंगा, अमेरिकन इंडियंस को मारूंगा, सबको मारूंगा, लेकिन भारत में आके मुझे लगता है नहीं नहीं, यहाँ पे ब्राह्मण है, मैं कैसे मारूं? ये थोड़ी कहेगा वो. ओके, सो देयरफॉर द पॉइंट इज, अगर उसके इंटेंशन के बावजूद या उसके नियत के बावजूद अगर आप जिंदा हैं, इसका श्रेय उसको नहीं जाएगा, हमें मिलता है, क्योंकि हमने रेजिस्ट किया है. The existence of the natives of this country and the unbroken traditions even to date is proof of the fact of the strength of the spiritual strength of this community compared to the Maoris, compared to the Africans, compared to New Zealanders, compared to Latin Americans. Or even for that matter, Persians. Where is Persia? Where is Persians today? Now their only scope for resistance, if you read their history, is how do we show our resistance to Islam? We will not adopt Sunni Islam, we will adopt Shia Islam. हम अरबी में बात नहीं करेंगे, हम फारसी में बात करेंगे. These are the only two options left for the Persians to show their resistance for colonization after the Islamic conquest of Iran. Right? We have our language left. Fortunately, Urdu सब पे थोपा नहीं गया अब तक. उर्दू कितना कंटेंशियस है, इसका आपको डिस्कशन मैंने सेकंड बुक में दिया है. How much of a problem it has created in the 1800s, what kind of a movement it has seen in Uttar Pradesh, or rather in United Provinces, in Bihar and other places. And why is it that Telangana Telugu is different from the Andhra Telugu? I'll tell you what the politics was. I'm from Hyderabad, so I know what exactly happened. The Nizam told people, you will not learn Telugu. Farsi became the language for all the people there. So these people retained Telugu only through the bolchal in their transactions. ना पढ़ना आता था, ना लिखना आता था, क्योंकि उस पे पाबंदी थी. And they were also learning smattering of Urdu. So the Hyderabadi Dakhni as well as Telangana Urdu have huge smatterings of Urdu because of this imposition. And that created the fissure between the Andhraite Telugu and the Telangana Telugu. Because the Andhra guy is relatively free because the Nizam territories were not there. Andhra territory fell under Madras Presidency. Okay. So Nizam's territory included some parts of Karnataka, some parts of Madhya Pradesh, some parts of Maharashtra, and some parts of currently Telangana. So those portions you'll find that the language is very different. And you will find certain words common in all these places. We don't say nahi, we say nakko. Yeah. And that's common in Maharashtra. That's common in parts of Telangana close to Maharashtra. In all these places, which has now gradually become the Naxal belt and has always been the Naxal belt. So considering this, the point that I've made here through this particular portion is to say, the literature clearly shows the extent of massive poverty and the number of famines that we have seen. We only know the famines of the 19th century.
सन्यासी रेबेलियन के पहले 1770 में इतना बड़ा फैमिन हुआ था. Okay, most people are not even aware of it. 1757 is the Battle of Plassey. 1764 is the Battle of Buxar. 1770 the famine has started in Bengal. Why Bengal? Because that's where the British power has started. So therefore, poverty to a significant extent, especially after 300 years of massive loot, is to be attributed to you. तो तुम जाते ही कहते हो तुम तो भिखारी हो, हमें भिखारी बनाया तुमने भाई. Suddenly you turn around and say आप तो पहले से ही पुअर है, तो हम अगर भूखे नंगे थे तुम यहाँ पे किस लिए आए थे? उधार करने थोड़ी आए थे तुम यहाँ पे. This is where I am saying Dr. Tharoor's book on the era of darkness is great from the perspective of economics, but in my criticism of his book, when I told it to him in his face during the debate, आप सिर्फ इकोनॉमिक्स पे रुक जाते हैं, उसके पीछे की सोच पे तो जाइए. Go behind it further. Economics and politics are the most superficial layers of exploitation. बात उससे पहले शुरू होती है. So here I have cited the work of Arturo Escobar, where I have clearly said, where he says, development को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है to change the way you see yourself in trade negotiations. As someone who has participated in certain, let's say, international discussions on trade secrets, because I'm fundamentally an intellectual property lawyer. Whenever you have a discussion with, let's say, representatives from the West, especially USTR के representations आते हैं, it's called the United States Trade Representative, वहां से आ जाते हैं, आपके देश में ना IP के लिए कोई वैल्यू नहीं है. There is no culture of respecting intellectual property. Trade secrets के लिए यहाँ पे कोई legislation ही नहीं है. वेस्ट यहाँ पे इसलिए पहुंचा है क्योंकि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट करते हैं. प्राइवेट प्रॉपर्टी को तुम रेस्पेक्ट करते हो, तुम तो चोर हो भाई. तुम कौन होते हैं हमें बताने वाले? Everything that you have is a product of loot. The land is a loot, the property is a loot, everything is a loot. So there I have, ये harmonization की बात करते हैं. They basically say we need to have global standards. What are global standards? Those standards that conform to US private interests and UK private interests and European private interests are global standards. तो ग्लोब और वर्ल्ड की जब बात होती है, they're talking of Europe and United States. Period. That's it. I know this firsthand. So they can bluff they can talk about this to anyone who doesn't know how trade negotiations work. I've seen them from a government perspective and I've also seen them from a private perspective. Okay, I'll give you a simple example. आपके पास कौन सा फोन है? Samsung. राइट में क्या लिखा है सबसे ऊपर ऑन द टॉप राइट? 4G 3G फलाना ढिमकाना, राइट? तो इसके स्टैंडर्ड्स कहां पे नियुक्त होते हैं? 4G के स्टैंडर्ड्स डोंट नो. सैमसंग के फोन में, Xiaomi के फोन में, एप्पल के फोन में, हर फोन में ये कंपैटिबिलिटी होती है. इसीलिए हम एक मेकर के फोन से दूसरे मेकर के फोन पे बात कर पाते हैं. दैट इज कॉल्ड इंटरऑपरेबिलिटी. यू कैन ऑपरेट फ्रॉम वन टू द अदर. तभी आप डेटा को एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर कर पाते हैं. ठीक है? दैट्स व्हाई द फोन्स हैव अ हैंडशेक. The technology is laid down by the former Post and Telegraph Office of France, which is now known as European Telecommunication Standards Institutes, HC. तो आज भी भारत में टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बाहर नियुक्त होते हैं. The Department of Telecommunications effectively adopts it. This is why you should not look at innovation or MNCs purely from the perspective of economics. They play a crucial role in geopolitics, which has become very evident today. Amna, you're next. हाँ, but I would also argue, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि जो इनोवेशन कर रहा है तो वो अपने हितों के बारे में पहले सोचेगा. पक्का सोचेगा. You're right. I don't disagree. I am saying that is the case. In which case, what are the fetters? So World Trade negotiations जब हो रहे थे WTO में, Marrakesh and let's say when GATT negotiations were going on under Narasimha Rao, बहुत सारे भारत में जुलूस निकले थे तब. In fact, every 15 मिनट एक ad निकलता था from the government कि भैया इस negotiation का मतलब क्या है, क्या हमारे जितने भी हित हैं हम उनको compromise कर रहे हैं. Okay, you know what the French and let's say the Swiss and others were primarily fighting for? Cheese and wines, because that is their primary export. And that's the source of revenue, including for tourism. But when it comes to ours, बासमती को ही चुरा के लेके गए थे, हमें लड़ना पड़ा. तो भारत के अंदर हमें अपने बचाव के लिए ऐसे अधिनियमों का मतलब ये we had to pass these legislations to protect us.
So I am not saying don't protect, but भैया don't speak from both sides of your mouth. हमारी भी तो प्रॉपर्टी है, इसका बचाव कौन करेगा? So which is why I'm saying every country has to look out for itself. आपके हित के बचाव के लिए कोई नहीं आएगा.